अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium due to change in its speed. When we see that the light, why are you so vibrating? Okay, here we will first write the definition of the refraction of the light. Refraction of क्यों वाइब्रेट कर रहा है? Refraction of light is the bending of light when it passes from one medium to another medium due to change in its स्पीड। ओके हो गया। आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली दी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम अदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन इट स्पीड। नाउ वी डिस्कस दी व्हाई दी चेंज स्पीड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। वी डिस्कस इट रीजन व्हाई स्पीड लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती है ड्यू टू पार्टिकल इन दी मीडियम्स। मीडियम के पार्टिकल से जब लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है तो मोर इंटरेक्शन की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लोअर हो जाती है। सो हियर वी राइट दैट लाइट चेंज स्पीड because it interact with particles in the medium. So here we write that when the more particles more interaction and slower स्पीड। जब किसी मीडियम में पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो लाइट की इंट्रैक्शन उन पार्टिकल के साथ ज़्यादा होगी। जब इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन दी लेस पार्टिकल्स इन द मीडियम, लेस इंट्रैक्शन एंड मैक्सिमम स्पीड। जब आपके पास लाइट की इंट्रैक्शन जो है वो पार्टिकल के साथ कम होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी जब वो वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में मूव करेंगे।
That is all about the refraction of the light. Who is live here, please drop a message in the comment section so I can thank you to you. Thank you so much for your time for watching my videos. Okay, now we discuss the how the reflection of light it work. Okay, however, in air, less dense medium particles are far apart, so light move fast. अगर हम एयर की बात करें तो एयर में आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट्स होते हैं. ये क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं? Ikrash, hi Ikrash, how are you? Thank you so much for commenting me and watching my videos. Only Ikrash is watching my videos. Thank you so much, Ikrash. Okay, in air, a less dense medium a less dense medium particles are far apart, so light move fast. ओके हो गया. इन एयर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो लेस डेंस होते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, और एक तो वो बहुत दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, तो इस वजह से लाइट की जो इंट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के साथ वो बहुत कम होती है, इसलिए लाइट जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव करती है. अगर हम डेंस मीडियम की बात करें, डेंस मटीरियल्स हैं दैट मीन ग्लास और वाटर. in glass or water in glass or water dense material particles are close together, so light slow down as it get absorbed by the particle of the medium. Now we talk about the denser medium. In denser medium, more particles is present. When the more particle is present, so light interact with the more particles, so light get observed, and then it moves slower, so light move slower in the dense medium. Okay, now we discuss the two cases when the light enter a denser medium from the less dense medium, so it gets slowed down and bent toward the normal. We discuss it detail in the next videos. Similarly, if the light enter a rare medium from the denser medium,
like glass to air, it speed up and bend away from the normal. We will discuss it with the diagram. Okay, here we write the just the points. First point is, if light enter a, तो मैं इसको सेट कर लूँ, क्यों इस पर सॉरी स्टूडेंट, मोबाइल को फिक्स कर रही थी, आज कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट कर रहा है। Okay, sorry. Where I reach, if light enter a denser medium like air to glass, it slow down and bend toward the normal sorry about it. Okay, second point is that if light enter a rare medium, it speed up. Why it is speed up in rare medium? Less particles are present, so it bend away from the normal and bend away from the normal. That is the how the reflection of light it work. First we discuss the definition and then we discuss it how the particle, how the light move in the medium when it is denser medium and rare medium. Okay, now move the next topic that is the refractive index. Aditya Raj, hello ma'am. Aditya Raj, welcome to my class. Aditya Raj, how you remember me? Yes, I remember you. How I can forget you? You are my favorite student, Aditya Raj. मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? काफ़ी दिन गायब रहे, कहाँ पे थे? यहाँ पे टीचर को गायब होना चाहिए, स्टूडेंट गायब हो रहे हैं, है ना? सॉरी, एग्ज़ाम थे मेरे, ओहो। कैसे रहे आपके एग्ज़ाम्स? आपको बहुत मिस किया, मैं भी कहूँ कहाँ पे गायब हो गया?
किस क्लास के थे एग्ज़ाम्स? थैंक यू सो मच फॉर योर दित्याराज. You come regularly for me. I miss you so much. वेल डन. आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए, इससे बड़ी बात क्या है. एग्ज़ाम अच्छे होने चाहिए. किस क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं? अभी 12 में हूँ. ओके, बेस्ट ऑफ लक. 11th क्लास के दिए, 12th क्लास के दिए हैं. ओके ओके ओके, मैं समझी आपकी शायद फाइनल एग्ज़ाम थे. ओके, बेस्ट ऑफ लक्स. जब रिज़ल्ट आएगा तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा आया रिज़ल्ट. ओके ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास जो है स्पीड होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो बताता है कि आपके पास जब मीडियम में लाइट पास करती है तो उसकी स्पीड कम होती है या ज़्यादा होती है. वो हमें क्यों बता रहा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. सो हियर वी राइट दैट द स्पीड at which the light with the speed at which the light travel in a medium. क्यों इतना वाइब्रेट कर रहा है आज? travel in a medium is determined by a property called refractive इंडेक्स. ठीक हो गया. अगर आपने किसी मीडियम में जो है वो लाइट की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल अस हाउ मच द लाइट स्लो डाउन और स्पीड अप इन डिफरेंट मीडिया. दित्याराज, लेट्स कंटिन्यू क्लासेस. मैम, डेस्क वाइब्रेट हो रहा है. वैसे दित्याराज, मैं खुद नोट कर रही हूँ ये आज जो है कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट कर रहे हैं. कोई रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं. फिक्स करते हैं कुछ. क्या हुआ है इसको? पता नहीं वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा. देखते हैं. अब इसकी जगह चेंज की है, देखती हूँ अब वाइब्रेट करता है कि नहीं करता. ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल अस हाउ मच speed of light
slow down or speed up in different media। ठीक हो गया, तो फिक्स हो गया है। वहाँ पे आई थिंक सो जगह कुछ अनबैलेंस थी, इस वजह से वाइब्रेट कर रहा था। अब तो वाइब्रेट नहीं कर रहा ना, सिर्फ इसको जगह का इशू हो रहा था, जगह अनबैलेंस थी। Okay, now we discuss the refractive index formula. How we define the refractive index with formula. The refractive index of a medium is related to the speed of light in the medium. So here we write that the refractive index formula, that is the n is equal to c over v. C, that is represent the speed of light, and that is represent the refractive index of the medium, and v is the speed of light in the medium. So here we write that where c is, that is the speed of light, its value is 3 into 10 की power 8 meter per second, and n, that is represent the refractive index, and v, that is the speed of light in the medium. That is all we discussed today. What is the refraction of the light, how it works, and refraction of the light and refractive index. Okay, now discuss the next topic. Next topic is the refractive index of different media. Okay, move to the next topic. Next topic, that is the refractive index of different media.
अच्छा, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट मीडियम की बात करें तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर that is equal to 1. If we talk about the refractive index of water, refractive index of water, that is the 1.33. We should know the value of the refractive index of different media because it's used in the different numericals problem. Similarly, refractive index of glass, that is the 1.5. So what we learn from this refractive index of different media, light bend more in the glass than water. Why the light bend more in glass? Because its refractive index is high than water. So light bend in more in glass than in water. If we talk about the refractive index of air, refractive index of air is less than the water and glass. So light is bend less when it is moved into the air because refractive index of the air is less. So here we write that light bend more in glass than in water because refractive index of glass is greater than the water. If higher refractive index, more bending, slower speed of light. That is, we learn from this refractive index topic, that is high refractive index, more bending, slower speed of light. Similarly, less refractive index, less bending, when bending is less, so greater the सचिन यादव किस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है एंड किस क्लास में? ये क्लास 10 का टॉपिक है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडिया का है और फिज़िक्स की क्लास है भाई। Okay, now we discuss the refraction change the wavelength. How the refraction change wavelength? Okay, now we discuss the refraction, that is change the wavelength of the light but the frequency stay the same. Refraction of light
refraction of light that change wavelength but its frequency stays the same. Here we discuss the example how refraction change the wavelength of the light. Sorry. Here we take the two medium, that is the glass or air. When it light passing from glass to air, its wavelength is increase. Here is light is passing from glass to air, its wavelength is change. This is the wavelength of the light in glass and this is the wavelength of the light in air. We clearly see that the wavelength of the light is greater in air than in the glass. So here we write that size of the wave bigger than the number of wave sent in a time is constant. What it means that when the light is passing from denser medium to rare medium, its size of the wavelength, its size of the wave is changed. It's become bigger, but the number of the wave is stay constant. Here is the we see that the one cycle is completed when it from enter to glass to air, one crust and one trough, and when it enter to the air it also have the one trough and one crust. That is called that the size of the wavelength is same, but number of the waves sent, that is sent per second, is same, but the size is changed. Only size is changed, but the number of the wave is same. Number of the wave that is sent in per second or per time, that is called frequency. So it means that the frequency is same but wavelength is changed. So here we write that since speed increase when enter from denser to rare medium, speed increase, frequency stay the
same. When speed increase, then wavelength is also increase. Wavelength also increase. Here we discuss another example, so we will learn it clearly what it means by when light enter from denser to rare medium, its speed is increase. Here we discuss the topic when the light enter from denser to rare medium, its speed increase, wavelength increase, but frequency stay the same. But now we discuss then the when light enter from rare to denser medium, what happen to its speed and wavelength. Frequency is always same. Only the speed and wavelength is changed in the reflection of the light. Here we take the air and here we take the water, and we also see that when light enter from rare to denser medium, it bend toward the normal. If we talk about it, wavelength become decrease when it enter from the rare to denser medium. Here see that here is the wavelength is the maximum, here is the wavelength is less. Why? It enter from rare to denser medium, so it speed become decrease. When speed is decreased, the wavelength is also become decrease. Here we discuss the example how the refraction is change the wavelength of the light. So here we write that size of the wave less when enter to the denser medium. Number of the wave is stays same, so frequency is same, but only the size of the wavelength is changed when it enter to the denser medium. So here we write that frequency stay the same. What is changed? Only speed and wavelength. So speed decrease. When speed decrease, wavelength also decrease.
Okay, here we write also understand with the formula, that is the V is equal to F into lambda. F that is equal to V over lambda. So in the ratio we learned that when the velocity increase, wavelength must increase to for the frequency stays constant. For frequency, that is the constant quantity, it is become only constant when the both the quantities are increase or decrease. Similarly, when the velocity is decreased, wavelength is also decreased, for frequency is stay constant. That is all about we today discussed, that how the wavelength is changed in the reflection of the light.